Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are making this beautiful flower coaster. आज हम ये प्यारा सा flower coaster बनाएंगे. You can even turn it into a beautiful bouquet. ये देखिए मिनी bouquet. इस तरीके से ये मिनी bouquet की तरह बन जाता है. It's really pretty. So this is what we'll be making today. I hope you'll like it. So let's get started. I'll be using these three colors: a crochet hook, 4mm crochet hook, tapestry needle, scissors and stitch markers. So let's begin. Let's start with the magic circle. We need to make a magic circle first. सबसे पहले magic circle हमें बनाना है. So I'll rotate my yarn like this, hold it with my middle finger and thumb, place my needle in, grab a loop and chain 1 to secure. तो इस तरीके से मैंने अपना magic circle बना लिया. आपके लिए जो भी way convenient हो आप उस way से अपना magic circle बना सकते हैं. So whichever way is convenient for you to make the magic circle, you can use that way. Now after making the magic circle, we'll chain 2 and this doesn't count as a stitch. ये chain 2 stitch की तरह count नहीं होगा. Now we need to make 12 double crochet stitches in the magic circle. तो इस magic circle में हमें 12 double crochet stitches बनाने हैं. Yarn over, go into the magic circle, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over and pull through 2. Yarn over and pull through 2, and this is the first stitch of the round, and I'll be adding my stitch marker here. Yarn over, go in, yarn over and pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So this is the way we do a double crochet stitch. So this is the third double crochet stitch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो 12 double crochet stitches बनाने हमने magic circle में हमने बना लिए हैं. Now after making 12 double crochet stitches, I'm just going to pull the yarn tail and close the magic circle. तो मैं yarn tail को pull करके magic circle को मैंने देखिए बंद कर दिया है. Now I'll remove the stitch marker and I'll slip stitch to the first stitch to join. तो जो जहाँ मैंने stitch marker लगाया है उसी stitch पे मैं slip stitch करके इस round को join कर दूँगी. So we'll go into the first stitch that we made and we'll slip stitch to join. So this completes our round number 1. Let's start with our round number 2. Chain 2. 1 double crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch. जहाँ पे हमने slip stitch किया था उसी stitch में हम एक double crochet stitch बनाएंगे. Yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. This is the first stitch of round number 2. I'm going to add my stitch marker to the first stitch. Now we'll make one more double crochet stitch into the same stitch. उसी same stitch में एक और double crochet stitch बनाएंगे. 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2 into the same stitch. 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में भी 2 double crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. 2 double crochet stitches into the next, and so on. We need to repeat this pattern until we complete our round. We need to make 2 double crochet stitches in each of the following stitches. तो हमें हर एक stitch में 2 double crochet stitches करने हैं. So just keep doing 2 double crochet stitches in each of the following stitches until you complete your round. And once you complete the round, you will have a total of 24 double crochet stitches. तो जब आपका round complete हो जाएगा तो आपके पास 24 double crochet stitches होंगी. 1 and 2. 1 and 2. So here I've completed the round by doing 2 double crochet stitches in each of the following stitches. This is the slip stitch of the previous round. We don't have to work there. So we'll just slip stitch to the first stitch to join. तो जो पहली stitch हमने जहाँ stitch marker लगाया है उसको slip stitch करके वहाँ से join कर लेंगे. This completes our round number 2. Now chain 2. Let's start with round number 3. 1 double crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch. तो जहाँ हमने slip stitch किया था उसी same stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे. And I'll add my stitch marker to the first stitch.
Now in the next stitch we need to do an increase. Next वाली stitch में हम increase करेंगे. So we'll place 2 double crochet stitches in the next stitch. Next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. Then in the next stitch we'll work 1 double crochet stitch. In the next we'll work 2 double crochet stitches, 1 and 2. Then again in the next we'll work 1 double crochet stitch. In the next we'll work 2 double crochet stitches. So this is the pattern for this round, 1 2 1 2 1 2 and so on until you complete your round. तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है. एक स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनेगा और नेक्स्ट वाली में 2. So we need to make 1 double crochet stitch in the first stitch and then 2 double crochet stitches into the next. So we are doing an increase on every second stitch. हर दूसरी स्टिच पे हम increase कर रहे हैं. And once you finish your round you'll have a total of 36 double crochet stitches. तो जब आपका राउंड कंप्लीट होगा तो आपके पास 36 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी. 1 and in the next 2, 1 and 2. Then again in the next 1, in the next 2, 1 and 2. So I'll complete the round using the same pattern and then meet you back here. So I've completed the round and now I'll slip stitch to the first stitch to join. तो जो पहली स्टिच थी जहाँ हमने स्लिच मार्कर लगाया है उससे स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देंगे. So this completes our round number 3. Round number 3 हमारा complete हो गया है. Let's start with round number 4. Chain 2, 1 double crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch. जहाँ पे हमने slip stitch किया था वहाँ पे एक double crochet stitch बनाएंगे. And I'll add my stitch marker to the stitch. 1 double crochet stitch into the next stitch. Next वाली में एक double crochet stitch बनाएंगे. Now in the next stitch we need to make 2 double crochet stitches. अब next वाली में 2 double crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. Then again 1 in the next, 1 in the next and 2 in the next. So this is the pattern for this round, 1 1 2. तो इस राउंड का यही पैटर्न है, 1 1 2. 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next and 2 double crochet stitches into the next. So in this round we are doing an increase on every third stitch. हर तीसरी स्टिच पे हम इंक्रीज कर रहे हैं. तो हर तीसरी स्टिच पे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस होने चाहिए. And by the end of this round you should have a total of 48 double crochet stitches. तो इस राउंड के एंड में आपके पास 48 डबल crochet stitches होने चाहिए. So 1 1 and 2, 1 and 2. Then again 1 in the next, 1 in the next and 2 in the next, 1 and 2. So I'll complete the round and meet you back here. I've completed the round. Now I'll remove my stitch marker and slip stitch to the first stitch to join. तो जो पहली स्टिच बनाई थी उससे स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर लेंगे. Now I'll chain 1 and fasten off. Since I need to use my green yarn now, तो मैं chain 1 करके fasten off कर रही हूँ. So now I'll take my green yarn. मैंने ग्रीन यार्न लेके अब एक स्लिप नॉट बनाऊंगी. आई मेक अ स्लिप नॉट एंड ऐड दिस टू एनी ऑफ द स्टिचेस. तो कोई भी स्टिचेस में इसे हम ऐड कर लेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग इन रैंडमली इन एनी ऑफ द स्टिच एंड आई विल बी एडिंग माई ग्रीन यार्न हियर. नाउ चेन 3, 1 2 and 3 and this counts as our first double crochet stitch of the round. तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा. वी नीड टू मेक अ डबल वी स्टिच here, so we need to make one more double crochet stitch into the same stitch. तो इसी same stitch में हम एक और double crochet stitch बनाएंगे. yarn over, go into the same stitch, yarn over and pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So the chain 3 counts as a double crochet stitch and we have another double crochet stitch. Now we'll chain 1 and make 2 more in the same space, in the same stitch. तो 2 और double crochet stitches उसी सेम स्टिच में हम बनाएंगे.
So here we have made a double V stitch. तो हमने यहाँ पे double V stitch बना लिया है. Now we'll skip 3 stitches. अब हम 3 stitches को skip करेंगे. 1, 2 and 3. Now we'll go into the next stitch and we'll work a double V stitch. अब 3 stitches को हमने skip कर लिया. अब यहाँ पे हम double V stitch बनाएंगे. Double crochet stitch, 1 more double crochet stitch, chain 1 and 2 more double crochet stitches into the same stitch. तो उसी same stitch में 2 और double crochet stitches बनाएंगे. So here we have another double V stitch. Then we'll skip 3 stitches. 3 stitches को skip करेंगे and in the 4th stitch we'll make a double V stitch. 4th वाली stitch में double V stitch बनाएंगे. 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches into the same stitch. So here again we have a double V stitch. Then we'll skip 3 stitches, go into the 4th one and make a double V stitch. 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same stitch. तो जब हम 2 double crochet stitches, chain 1 और 2 और double crochet stitches एक ही stitch में करते हैं तो वो stitch हमारा हो जाता है double V stitch. So this is the way we have to keep on doing until we reach the starting point. Skip 3, go into the 4th stitch, make a double V stitch. So do double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same stitch. Then again skip 3, go into the 4th one, 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches, 1 and 2. Then again skip 3, go into the 4th one, 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same stitch. So this is the pattern we need to follow for round number 5. I'll complete this round and then I'll show you what to do next. So इसी तरीके से आपने ये पैटर्न फॉलो करके राउंड कंप्लीट करना है. मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. I have completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया and here 3 stitches are left. So I'm just going into the top chain of the 3 chains that we had made at the beginning. तो जो 3 chain हमने बनाई थी उसकी टॉप वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे. So we'll just go on to the top chain, the 3rd chain of the chain 3 and slip stitch to join and chain 1 and fasten off. Just tighten it and then we can weave in at the end. तो ये जो yarn tails हैं इसे हम end में weave in कर सकते हैं. So this completes our round number 5. Let's start with our round number 6. So now I'll be using my shiny yarn for the flowers. तो मैं flowers के लिए ये वाली yarn यूज़ कर रही हूँ. You can use any yarn that you have. तो कोई भी yarn आप यूज़ कर सकते हैं. Now we'll make a slip knot and add this yarn. तो slip knot बना के इससे पहले add करेंगे. And we need to add this in between the V stitch here, the chain 1 that we had made. तो जो double V stitch हमने बनाया था उसके लिए जो chain 1 बनाया था उस chain 1 में हमें इसे add करना है ये वाली नई yarn को. So in between we have, these are the double V stitches and we have chain 1 in the double V stitch. So in the double V stitch we will add our yarn. So I'll put my needle in the chain 1 space of the double V stitch and I'll add my yarn here. Chain 2 and now here in this chain 1 space we need to make 5 double crochet stitches. तो इस chain 1 space में हम 5 double crochet stitches बनाएंगे. Yarn over, go in, yarn over and pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Then another double crochet stitch, 2, 3, 4, 5 and 6. Oh, sorry, 5. Okay, 5. Okay. So now we'll pull up a loop, take our needle out, go into the first double crochet stitch that we made and we'll pull the loop through that stitch. So here we have done the popcorn stitch. तो यहाँ पे हमने popcorn stitch कर दी है. Now chain 3, 1, 2 and 3 and slip stitch in the same chain 1 space. उसी same chain 1 space में slip stitch करेंगे. So here our flower is done. Now we'll slip stitch into the next space between the V stitches
and then we'll slip stitch into the chain 1 space of the V stitch and we'll start our round from there. तो यहाँ से हम अपना round start करेंगे. Chain 2, 5 double crochet stitches in the chain 1 space. 1, 2, 3, 4 and 5. Then pull up a loop, pull the loop a bit, take out your needle, go into the first double crochet stitch that you made and pull the loop through that stitch. Chain 3, 1, 2, 3 and slip stitch in the same chain 1 space. उसी same chain 1 space में slip stitch कर लीजिए. Then slip stitch in the next space that we have here in between the V stitches. तो जो V stitches के बीच में slip stitch है वहाँ पे जो space है वहाँ पे slip stitch करेंगे. Slip stitch in the chain 1 space of the double V stitch and start your next flower. Chain 2, 5 double crochet stitches. 1, 2, 3, 4 and 5. Then pull your loop a bit and take out your needle, go into the first double crochet stitch and pull that loop through that stitch. Chain 3, 1, 2, 3 and slip stitch in the same space. Now slip stitch in the next space that is here. Slip stitch in the chain 1 space and start your round from here. तो इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है. मैं एक बार आपको प्रॉपर्ली समझा देती हूँ. चेन 2 करेंगे पहले. चेन 2, इस चेन 1 स्पेस में 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 5 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द चेन 1 स्पेस. 1, 2, 3, 4 एंड 5. उसके बाद अपना लूप थोड़ा सा पुल करेंगे ताकि हमारे स्टिचेस खुलेंगे नहीं. So just pull the loop, take out your needle, go into the first double crochet stitch that you made. तो जो पहला डबल crochet stitch बनाया था उसमें नीडल डाल के इस लूप को उस स्टिच से पुल कर देंगे. So we'll take that loop and pull it through that stitch. तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो जाएगा. So this is our popcorn stitch which gives a beautiful look of a flower. चेन 3, फिर से चेन 3 करेंगे और उसी सेम स्पेस में जहाँ हमने ये फ्लावर बनाया है चेन 1 स्पेस वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एंड स्लिप स्टिच इन द सेम स्पेस. फिर नेक्स्ट स्पेस में जो स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्पेस, स्लिप स्टिच इन द चेन 1 स्पेस एंड स्टार्ट योर नेक्स्ट फ्लावर. तो इस तरीके से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है. सो आई विल कंप्लीट द राउंड, फॉलो द सेम पैटर्न, कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड बाय मेकिंग ऑल द फ्लावर्स यूजिंग दिस पॉपकॉर्न स्टिच. मैंने सारा जितने भी फ्लावर्स थे वो बना दिए हैं हर एक वी स्टिच में, हर एक डबल वी स्टिच में. नाउ आई विल स्लिप स्टिच इन द space between the V stitch and I'll slip stitch where we started our first flower. तो वहाँ पे मैं slip stitch करूँगी जहाँ मेरा पहला flower है and then I'll chain 1 and fasten off. तो यहाँ से मैं fasten off करूँगी. Just tighten it and then we can weave in all the yarn tails at the back side of our work. तो ये जो हमारा वर्क का बैक साइड है यहाँ पे हम सारी जितनी भी yarn tails है इसे हम weave in कर देंगे. So I'll weave in all the yarn tails and then meet you back here. So I'll just go in couple of stitches. And then just pull it through. तो इसी तरीके से मैं अपनी बाकी yarn tails भी अटैच वीव इन करके कट कर दूँगी. So I'll weave in all the yarn tails and then meet you back here. So here I've weaved in all the yarn tails and our beautiful flower coaster is ready. This is how it's looking. ये देखिए हमारा flower coaster बन के रेडी हो गया. ऐसे दिख रहा है ये. और जब आप इसे यूज़ करें आप ऐसे रख सकते हैं इसे. और जब आप इसे नहीं यूज़ कर रहे हैं, when you're not using it, you can just roll it up and place it somewhere where it looks like a pretty bouquet. तो ये देखिए बुके की तरह दिखता है बिल्कुल. इतना खूबसूरत लगता है ये. ऐसे आप बहुत सारे बना के एक साथ अगर रखेंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा डिफरेंट कलर्स से. So you can even make different coasters using different colors and then when you're not using them you can just place them in some
small cup, and they look so pretty. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel. Keep crocheting. Stay safe. Be happy. Bye bye.